So here we have found that we have here y bar st, and I think I have written this all numbers. You can just verify. For some numbers I have only 2 digits, so if you have total number, you can just tell me, and even this number also. So one can just calculate these values. Calculating these values are very simple. 21 plus 26 plus 30 divided by 3. So you may come up with 6 times. You can just so this right 6. I can take 7 also. And similarly, I think this is 3. So one can go with always 4 digits. And once you just do the simplification, you may turn out with this result, which is there. Okay. So now we are interested to obtain variance, right? So what's the formula for the variance? We have seen the formula for the variance is here, right? So we can define the variance part here. So this variance you can consider. We'll test if this variance will be there. So this is the variance of y bar st formula. So now we need to obtain this all values. Okay. So how to calculate these values? That is the question mark is in front of you. Okay. So here we need to obtain small si. We need to obtain small si. So what's the formula for small si? तो स्मॉल एस आई स्क्वायर का फॉर्मूला है सर. किधर है? तो एस आई स्क्वायर का स्मॉल एस आई स्क्वायर का फॉर्मूला है ना. हाँ वो फॉर्मूला है, बट इट्स डिनोमिनेटर इज लाइक n-1, राइट? यस सर. हाँ, तो मतलब क्या करना है एक्चुअली अपने को डेटा सब्स्टिट्यूट करना है. यस. डेटा, तो फर्स्ट डेटा सब्स्टिट्यूट करो और si निकालो. Means you have to feed this data in SD mode. So in examination you make sure that you feed the data in SD mode like this data and calculate y bar I and si directly from the table. Okay, means no need of like calculating manually mean. You feed these values in SD mode, and whatever the mean you will get it right down here. Whatever the si square you are getting right down here. Okay, so just feed it and let me know what is the answer. Feed all the data in SD mode. What is the answer? Let me see. What's the formula first? Let me see the formula. Si square formula is 1 upon n minus 1. This one, right? Yes. What is the answer? Is that? हेलो सर. Yes, बेटा बोलिए. सर कैल्सी पे कौन सा वैल्यू डालना है इसमें? कैल्सी में आपको फर्स्ट डेटा एंट्री करना है. फर्स्ट डेटा 2 4 5 8 1 3 6. ये डेटा एसडी मोड में फीड करना है. yes, और x n-1 select करना है because your denominator is n-1. yes. You may come up, your output will be this 8.095. Just check everybody. Just check everybody.
Similarly, you feed second value. You feed second value 10, 9, 14, 8, 16, 15. You may get the answer 11 point something. Yes sir, मिला आंसर. क्या मिला? 5.8094 से सेकंड का निकाल रहा Yes, था. yes, yes. Second निकालिए. Akash, what is this 54.07? Acha, you have given the answer, total answer. Okay. Can you tell me these values, SI square values, so that I will write it down and others can just cross check. 11.6 या second. 11.6. 11 point. 6. That's it. Yes, sir. Yes sir. Okay. What about third one? 20.333. 20.33. Only 2 times 3. No, 4 times. Fourth time. Okay. What about fourth one? 16.333. 4 times. 10.3333. So when you add up this all, क्या मिलता है? 54 point 0761. Just check it. 0761. And now you have to calculate WI square SI square. And the next entry is sorry, I think I just copied wrong. Where it is. हेलो सर. Yes, beta बोलिए. सर उसका समीशन का वैल्यू 10.4795 आ रहा है. किसका समेशन डब्ल्यू का आई एस वैल्यू? एस स्क्वायर. हाँ देखिए मैच हो रहा है. समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एस एस स्क्वायर. हाँ. यस सर, ये मैच हुआ. Try out. Just find out this one. And now you need to just calculate next quantity, which is what is next? You have WI SI square upon NI, and you have WI SI square upon capital N. So once you calculate this quantity, you just divide by Ni. Ni means 7. ये आ जाएगा. And again take same number and divide by 40. You will be get this one. So you parallelly you have to calculate the respective column. ऐसा नहीं एक बार एक पूरा calculate कर लो, नहीं ऐसा नहीं. You need to just calculate first entry, divide by 7. तो आपको ये मिल जाएगा. Then again you take same entry, divide by 40. So simultaneously will be complete one straight up. So now I just want all numbers. So if anyone can give me that up to 4 digits number, so that I will write it down.
हेलो सर। यस बेटा बोलिए। सर वैल्यू बताऊं? हाँ वैल्यू बोलिए। डब्ल्यू आई एस आई का वैल्यू बोलिए। डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई का वैल्यू 1.1221 1.1 1221 टू 1 1.4340 1.4330 40 4340 सर 4340 40 ओके नेक्स्ट वन। सर आगे का 413.45 0.2190 आपका बैकग्राउंड का आवाज 0.2190 आपका बैकग्राउंड का आवाज आ रहा है, मेरे को आवाज नहीं आ रहा बराबर। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा सर बैकग्राउंड का। अच्छा इसका है भाई, बट म्यूट कर लो भाई जो है। इसका बोलिए 0.24 2190 2190 है। यस 2190। Others please verify answers. Okay. Next one. 0.1597 1597. 7 Please others please verify these values and tell me this one. फटाफट। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में बोले, others can also tell me these values. No problem. हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। 0.1603 0.1603 0.239 239 0.0817 0.0817 0.0532 0.0532। What about और this सर one? सेकंड वाला भी बोलो। हाँ ये भी बोलिए। 0.028 0.0 0.0280 okay 0.0448 448 0.0245 0.245 0.0177 टोटल कितना आ रहा है सबका बता दो चलो फटाफट। इसका टोटल बोलो। इसका टोटल का जरूरत है अपने को, है तो ही निकालने का, नहीं तो नहीं निकालने का। इसका टोटल बोलिए कितना आ रहा है। टोटल ऑफ लास्ट 0.5342 इसका 0. Yes anyone? 1689 just check. zero point 114 sir 11 468 468 okay. So now you need to substitute this value will be here. तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे I have given this form to be memorized, right? But if you just further simplify, this is going to be summation I takes value 1 to k. If I just get simplified, it will be 1 upon n, right? So it is, sorry, it is going to be WSI upon NI minus summation WI SI upon capital N, right? So you have directly this quantity, you have directly this quantity, you can substitute and get the answer. So we have, this is 5 point, so this minus this, I think it is coming negative. हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर इसका 0.115 आ रहा है। किसका?
लास्ट वाला 0.11468 है ना, वो हाँ 15 आ रहा है। अच्छा अच्छा 0.115 5 that's it. उतना ही है सर। यस सर। ये सब 4 डिजिट्स में, तो 3 डिजिट्स में कैसा है? लास्ट में 0 है क्या? यस सर यस सर। हाँ ठीक है, so can put it 0. अभी क्या करना है? this quantity minus this quantity, so you have this value. हेलो सर। sorry बोलिए बेटा। सर उसमें का थर्ड वैल्यू रॉन्ग है सर। कौन सा? डब्ल्यू आई स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन आई का थर्ड क्या वैल्यू क्या है बोलो? 0.2451। 2.0219 0 to 19। 0 to 19। यस सर। क्या डिवाइड किया? ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 10। 10 किया क्या? देखो। यस सर, हाँ यस हाँ तो यही आएगा। राइट 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 10 डिवाइड करेगा तो ये तो क्लियरली दिख रहा है ना। यस सर, Yes. सर तो सर रॉन्ग है सर ये। हाँ बेटा बोलिए। सर सर एक्चुअली डब्ल्यू आई स्क्वायर इंटू एस आई स्क्वायर का थर्ड वैल्यू जो है वो 0.2451 है। अच्छा मतलब यही वैल्यू में गड़बड़ है मतलब। हाँ That's why it is coming a little bit change. 0 point. So you have to cross check properly these values, huh? Otherwise it will not match. Oh, fine. सर 5-1 हाँ 5-1 है। अच्छा fine. Oh, ठीक है, just assume it is 1. Fine. Okay. So now so just substitute these two values here. So 0 point क्या है? 0 point 4192 yeah 0.53 42 minus 0.1150. If you do subtraction, you may turns out with this. So just tell me the answer. 0.4192 0.4192. 92। So this is the final answer for estimate of the variance of population mean, which is variance of y bar st hat. Now one can get their total also. Okay, so that is the variance of total variance of population total. n Variance, square into variance of y bar xt। yeah, variance of population total, which is n square into variance वेरिएंस ऑफ y of. बार st। अच्छा लेकिन प्रॉब्लम देखो, पहले प्रॉब्लम में क्या बोला है? स्टैंडर्ड एरर बोला है कि क्या बोला है? जस्ट चेक इट। स्टैंडर्ड एरर सर। हाँ तो इधर तो उसको कंप्लीट करो पहले, इसका स्क्वायर इसका रूट रूट ले। निकालना पड़ेगा ना। हाँ इसका हाँ रूट निकाल लो, रूट निकाल के यहाँ साइड में लिख लो, तो दैट पार्ट यू कैन डू इट। सर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन मीन का हाँ उसका स्क्वायर रूट देखिए, अपने को स्टैंडर्ड एरर आई थिंक बोला हुआ है ना बेटा। यस हाँ तो उसका स्क्वायर रूट अपने को लेना। लेट मी ओपन दैट। 0.6474। एक मिनट, आई एम ओपनिंग दैट प्रैक्टिकल। So I will write down here only. A standard error of y bar st is going to be
0.6474. 0.64 0.64 74. 7. अच्छा इधर लिखूंगा तो बराबर तुम्हारा प्रिंट होगा. So you can get this value, standard error of this value, and once you have this value, so we get variance of y bar this one, and similarly you can get this value. You just multiply n square with this value 0.419 into n square. So n is 91 I think. Yes, sir, 91 square. Just multiply करो और मुझे आंसर 3471 3 4 7 point 3 4 71 7 1 point point 3952. 3952. And now we need a standard error for population total, which is square root of this value 3471.3952. So, and we can come directly answer. तो क्या आता है? 48.191. हाँ? 48 point 58. 58. अच्छा 58.91. 91. That's it. 9185, sir. 9. What is required here? That's it. और कुछ बाकी है? 95% confidence interval. Huh? Yes. 95% confidence. Okay, let's try to 95% confidence interval. So we have 95% confidence interval for population mean. So we are writing for first mean. तो क्या है? Y bar st plus minus t alpha by 2 n minus 1 into standard error of y bar st. So what is your y bar st? This is, I think we have found. What is that? 12 point. 0.6474. No. Y bar st is this. 12.4513. 12.4513 Yes, sir. Yes. plus minus t alpha by 2. So alpha is 5%, and so alpha by 2 is 0.025 into n minus 1. So n minus 1 बोलेगा तो we have n is 19, so it's become 18. Okay, I may write directly answer here so that you can calculate this value. So you can write the value of this using table. So that answer will be 0.101 into standard error. So we have just found standard error, which was 0.6%. 0.647. Right. And you can see here, I will just calculate, and alpha is 5. Hello, sir. Yes, beta बोलिए. सर माइनस प्लस आता है ना फॉर्मूला में? ठीक है, अपना प्लस माइनस लिखा है.
So just calculate this. You may get the answer for the same. Similarly, one can find 95 and confidence limit for. I'll give some space for this. For हेलो सर आंसर मिला एक बोलिए टोटल फाइनल आंसर 13 point यस सर 13.8114 8114 comma 11 point नहीं जब उल्टा बोल दिया मतलब आप प्लस पहला बोल दिया बिकॉज हाँ माइनस प्लस वही हाँ हाँ सर वो पहले हाँ, क्योंकि पहले कभी भी छोटा होता है बाद में बड़ा होता है हाँ सर इट्स इंटरवल 11.0911 11.0 0911 0911 1 ठीक है now similarly you can write for this one यस सर ये दो वैल्यू तो इसका क्या है टोटल का 1133.0683 0683 minus 2.101 58.9185 so you may get this answer for this one हेलो सर yes बेटा बोलिए सर मुझे 1131 आया था वैल्यू 1131 1131 यस 0.4303 91 से मल्टीप्लाई करोगे Why- इसको तो सर मेरा वैल्यू दूसरा है सर मेरा 4333 आया था मतलब इसका आंसर डिफरेंट है यस सर डिफरेंट आया मेरा 1133 नहीं आ रहा है नहीं सर तो क्या आ रहा था ये आपका वाई बार एस टी सेम आया नहीं सर 12.4333 आ रहा है मेरा तो थोड़ा डिफरेंस है फिर ये सब वैल्यूज चेक करो देखो क्रॉस चेक करो राइट सर you can just multiply just tell me these values if anyone calculated 1009 1009 0.2805 2805 and what about this one 1256 1256 .856 point 856 856 हेलो सर yes बेटा बोलिए सर आपका प्रीवियस क्वेश्चन निकालो ना मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट पेज वो ये टेबल वाला वाला ये वाला हाँ सर एक मिनट बता रहा हूँ मेरा क्या आता है सर WI बार का वैल्यू में मतलब आपने लिखा नहीं है हाँ वही वो नहीं लिखा है मैंने राइट वही नहीं बाकी सब लिखा है उसको छोड़ के सब लिखा है अच्छा किसी ने कैलकुलेट किया है आंसर इसका लेकिन सर मेरा वैल्यू सब बाकी सब वैल्यू सेम है सर आपके जैसा हाँ तो फिर तो इधर क्यों ऐसा आ रहा है ठीक है आप जस्ट माइनर चेंज है इट इज नॉट वेरी बिग आई थिंक बट मेजॉरिटी इज गेटिंग दिस आंसर 12.4513 yes those students are present 28 students present majority students are getting this answer Sir, 4547.
4547, अच्छा अभी देखो अब कुछ अलग ही आ रहा है। सर वो 4 डिजिट के लिए था ना, हाँ तो इस 4 डिजिट के लिए यही आंसर आ रहा है। अच्छा ठीक है, सो विल फॉलो 4 डिजिट्स के लिए आंसर आएगा, ठीक है। अगर जिसका आंसर, अभी देखो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, अगर आप इसको एक्सेल में करोगे ना, तो एक्सेल में ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि 3 मिनट के ऊपर आप लेओगे। क्या करना है, यू ट्राई आउट। जो थोड़ा बहुत जो जो स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत एक्सेल जानते हैं, एक्सेल मतलब एक सॉफ्टवेयर है, यू नो एक्सेल राइट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नाम सुना है क्या? Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। तो क्या करना है ना आपको, एन वैल्यू, स्मॉल एन वैल्यू और वाई बार वैल्यू, ये सब वैल्यू ना आपको उसमें फीड कर देना है सिस्टम में। और जैसे फीड करोगे वहां पे नेक्स्ट वैल्यू डब्ल्यू आई निकाल, डब्ल्यू आई कैसे निकालोगे, ये सेल इक्वल टू ये सेल डिवाइड बाय 91, और उसको स्क्रॉल करोगे तो ऑटोमेटिक सब वैल्यू मिल जाएगा। फिर वाई बार आई निकालना है, तो उसमें मीन का डायरेक्टली फॉर्मूला है वाई बार का, तो दिस इज इक्वल टू एवरेज एंड सिलेक्ट दिस एंट्रीज, तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला डायरेक्ट है, मतलब आप अगर आपको वेरीफाई करना है कि मुझे मेरा आंसर किधर मिस्टेक हो रहा है, तो आप, I think that will be the very I can say best software one can use it for and do the calculation within 3 minutes. Okay, so everyone can go for this one, and even that is new, like you can just work on and cross check हेलो answer. सर। Yes, beta. सर अगर 1131 आएगा तो आंसर रॉन्ग है क्या सर? 1131 आएगा लास्ट का वैल्यू, तो 1.1131 लास्ट वाला सर, लास्ट वाला 1 लास्ट वाला मतलब सर, मतलब जो आपने लिखा ना 1133, वहाँ पे 1131 लिखेंगे, आएगा, चलेगा क्या? ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है। हाँ सर, डिफरेंस तो तो है। ठीक है, मतलब आपने आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से निकाला है, लेकिन 4 डिजिट्स बोल रहे हैं, मतलब आपने भी 4 डिजिट्स ही लिया है ना। यस सर। तो फिर उसके हिसाब से तो फिर आना चाहिए। ठीक है, जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना वापस से और आ यस जाएगा। सर। So this is the question number 1 we have completed. Now we'll go to question number 2. So I'll share the question number 2. You can see here question number 2. Just try to read it, और अगर सेम हुआ then I will leave it. You can try out. सेम नहीं हुआ तो थोड़ा हम लोग एक बार करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। A farm state are divided according to the known size, mean you know the size, into 6 strata, means I take value 1 to 6. अच्छा इधर मैंने, ठीक है, I'll tell you that. Total number of farms estimated means and standard deviation, means okay, means based on this data they have a mean value is there, means y bar I आपको मिल गया है, और estimated standard deviation of the weight, मतलब ये SI भी मिल गया आपको, means because it is based on the data they have calculated. Okay, so I think the table number 2 is directly given to you. You have to just work, and this is standard deviation. Okay, means we have given SI, not SI square, don't get confused. Okay, don't get confused. So and what else given here, number of farms is also given. Number of farms means it is basically your capital NH, capital NI. Okay, and the farm size 0 to 50, farm size. So I think size का इसमें कुछ रोल नहीं है, but based on this they have given the, इससे अगर साइज आप जानोगे तो उसके हिसाब से कितने फार्म्स होंगे आप वो पर्टिकुलर एरिया में बैठा सकते हो, दैट्स व्हाई दे हैव गिवन साइज, बट देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइक देयर इज नो यूज ऑफ साइज. ओके, it is required to take a 200 sample, means small n is 200, that is known, to estimate the total wheat in the state. How this farm should be distributed among strata under proportional location, under optimum location, and compare the estimated standard deviation of two estimator population total of 10 from the samples with from SRSWR, and hence state the method which is recommended. अच्छा, मतलब क्या क्या बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है मतलब, ठीक है। सो फाइनली क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चन 1 by 1 जाएंगे.
तो मुझे क्या मालूम पड़ा, ये मेरा स्टैटम साइज है विच इज कैपिटल एन आई, और स्मॉल एन मेरे को दिया है 200। तो लिख लो स्मॉल एन इज 200, और ये टेबल आप पूरा बना लो। तो टेबल में क्या क्या बनाना है, एन आई बनाना है पहले, दूसरा बनाना है वाई बार आई बनाना है, तीसरा बनाना है एस आई। 3 कॉलम बनाओ फटाफट। 3 कॉलम बना के, तो स्मॉल एन दिया है 200, you need to create I, or I may just copy this table. So have you created three table? Yeah, 3 column. Number of farms, that is your capital NI. So we have a capital NI, and we have 6 entries. So let me know how much you have completed. How much completed? NI, Y bar, SI. All entries लिखो, सब entry लिखो फटाफट वहाँ पे। हेलो सर। Yes, बेटा बोलिए। कैपिटल एन आई, वाई आई और स्मॉल एस आई, यही तीनों लिखना है ना सर? Yes, ये तीनों लिख लो पहले फटाफट, और फिर क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चंस में क्या निकालना है फिर समझेंगे उसको। ओके।
Done. Now calculate you calculate one more column, that is SI square. SI square, because we have SI, so you can immediately calculate SI square. And once you have computed SI square, in the problem, if you see the problem, we are interested to obtain how this farm is distributed among the proportional location and optimum location. That means we are interested to obtain the small n, means ni, okay. So we need to calculate ni. So what's the formula for ni? If you remember the formula I have, I think it is given on the 1 uh, upon ni minus 1. under proportional location, na? Yes. ये है n ये, upon yeah. So small n upon capital N, or I will say width. So let me one can calculate wi also, है ना? yes wi sir. भी, तो wi निकाल लेते हैं हम लोग, which is ni upon, तो थोड़ा सा easy हो जाएगा. Summation n. एक सर निकाला वैल्यू. wi का Yes sir. एक मिनट मैं just लिखता हूँ. तो मुझे सीधा wi का वैल्यू बोलिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. बोलिए. 0.1 एक 0.1 1 हाँ बोलिए. 0.1 0.1 666. 666. What about next one? 0.4 times 4. 4 4 times times 3. 4 3. 3. Others please verify the answer. Next one. 0.25. 0.25. Okay. Next one. 0.125. 125. 0.0833. 0833. 0.04. 04 16. 16. Okay. Then wi मिल गया. अभी क्या निकालना है मुझे? सैम्पल साइज निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है? ni is equal to wi, means I will say ni upon n, like that. ni upon n into small n, है ना? तो स्मॉल n मेरे पास है 200. ni upon n इज नथिंग बट wi. तो सब सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे और उसका आंसर निकाल लो आप. और बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे.
सो सिमिलरली आपने NI निकाला ना, अभी सिमिलरली आपको दिस इज अंडर प्रोपोर्शनल लोकेशन, दिस इज अंडर द proportional location, this you can call under proportional location. तो हम लोग लिखेंगे बाद में, we will write it down later on, बट फिलहाल के लिए आप ये टेबल NI के लिए दिस इज proportional location निकाला. सिमिलरली आप अभी इसके लिए निकालो, किसके लिए, ऑप्टिमम के लिए निकालो. तो ऑप्टिमम का फॉर्मूला क्या है वो चेक करो, ठीक है. WISI, दिस वन आई थिंक आई हैव रिटन समवेयर, दिस n वन. into NISI. हाँ, तो n इंटू SI, तो SI हमारे पास है, वो SI का मल्टीप्लाई, मतलब यू नीड टू कैलकुलेट दिस वन और उसका टोटल, ठीक है. तो जस्ट कैलकुलेट करो, नेक्स्ट टाइम देखेंगे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. सर वेरिएंस फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ y bar st. हाँ, वेरिएंस में निकालना है, आई थिंक आई विल या वेरिएंस निकालना है दोनों का, यस सर. दोनों का वेरिएंस निकालना है और SRS से कंपेयर भी करना है अपने को, मतलब SRS का भी वेरिएंस निकालना पड़ेगा तुमको. और वी हैव सीन ना कौन सा मेथड बेस्ट है, आई थिंक द नेम एंड लोकेशन, ऑप्टिमम लोकेशन इज बेस्ट. तो उसके हिसाब से डेटा को अपने को प्रॉपर्ली मिलेगा, एंड दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. यस सर. Hopefully Saturday I will finish this, but it is better you can do the calculation, because it is all matter of doing calculation. So जितना जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा है, because you can just, anyone can just tell me the values and others maybe verify, but like don't be like you should be like do the more calculation, then only you can do fast, otherwise it is difficult, okay. So we'll end the session, and we'll see if you have any query. Do you have any query? I think. हेलो सर, Yes बेटा बोलिए. आप फॉर्म सेंड करने वाले थे गूगल. अच्छा, इसके लिए आए क्या?